Hello student, welcome you all. Today we will discuss parathyroid gland. Before we start the actual discussion on parathyroid gland, we discuss one more hormone of thyroid gland. In previous audio, we have discussed the thyroid gland hormones like T3, T4. One more hormone is produced by thyroid gland, and that hormone is called thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin, this is the hormone produced by thyroid gland apart from thyroxine T3, T4. This hormone thyrocalcitonin is secreted by parafollicular cells of thyroid gland. And what is the function of this thyrocalcitonin? It regulates the blood calcium and phosphorus level, and it acts antagonistic to that of parathyroid hormone. Antagonistic means opposite, adverse, reverse direction. Antagonistic. तो थायराइड हार्मोन कौन सा है? थायरोकैल्सिटोनिन. और पैराथायराइड का हार्मोन है पैराथार्मोन. थायरोकैल्सिटोनिन, दिस इज द हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड पैराथार्मोन, दिस इज द हार्मोन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन? थायरोकैल्सिटोनिन मूव्स द कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन. ब्लड में से कैल्शियम मूव करता है बोन में, डिपॉजिट करता है बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. और उसका उल्टा पैराथार्मोन, इट टेक्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम बोन टू ब्लड. इट रिजल्ट्स इनटू ऑस्टियोपोरोसिस. दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो दिस स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट because last time we have not discussed about this thyrocalcitonin while discussing the thyroid gland, structure and function of thyroid gland. So apart from T3 and T4, thyroid also secrete thyrocalcitonin, important hormone which regulate blood calcium. So now we start the parathyroid gland. Parathyroid gland, in this diagram the location is here. This is thyroid, and in thyroid these 4 parathyroid glands are there. 4 oval small endocrine glands situated close to thyroid, 2 on each lobe. So this is the one lobe of thyroid gland, and this is another lobe, left and right lobe. In this lobe, this yellow colored parathyroid gland is located. This parathyroid gland secretes PTH, that is called parathormone. PTH means parathormone. It is also called as Colles hormone, which maintain the metabolism of calcium and phosphate. That is, movement of calcium and phosphate from bone to blood. Movement of calcium and phosphate from bone to blood. So this is important. This parathormone PTH is responsible for movement of calcium from bone to blood. Whenever there is a deficiency of calcium in blood, then it is derived or taken from the bone, and that's why bone becomes weak or porous, which results into osteoporosis. Osteoporosis means, osteo means bone, porosis means holes. तो बोन में ऐसे छेद होते हैं, पोरस हो जाता है स्पॉन्ज लाइक, एंड इट इज मोर ब्रिटल बिकॉज कैल्शियम बोन में से निकाल लेता है ना यह हार्मोन. हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैराथायराइड ग्लैंड. पैराथॉर्मोन सिक्रीशन इज अंडर फीडबैक कंट्रोल ऑफ ऑपरेटेड बाय कैल्शियम लेवल इन ब्लड. पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन कैसे होता है, कौन कंट्रोल करता है? दैट इज ए फीडबैक मैकेनिज्म. और फीडबैक मैकेनिज्म मतलब कैल्शियम लेवल ब्लड में कितनी है ये कंट्रोल करता है पैराथॉर्मोन सिक्रीशन. अगर ब्लड में लो कैल्शियम लेवल है, लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन, while high blood calcium level inhibits the secretion. So there is a feedback mechanism for the secretion of parathormone.
hyperparathyroidism. Hyper means high activity, more secretion of PTH. What happened in this case? Increase in PTH is due to parathyroid lesion. Parathyroid lesion. Lesion means that is some kind of injury, damage, like ulcer, or tumor, situation, swelling. That is called lesion. So when there is a damage or swelling, ulcer-like tumor formation in the parathyroid, the hyperactivity takes place. That hyperactivity is because of adenoma or hyperplasia. This is the same thing, adenoma, hyperplasia. Adenoma, that again tumor, swelling, tumor formation, but not cancerous tumor. If any tissue is swelled, enlarged, or formation of tumor, that is called adenoma. And hyperplasia is the same thing, that is enlargement of the tissue or organ, that is called hyperplasia. So these are technical words, medical words, but this PTH is secreted when there is a adenoma of the parathyroid gland, and it results into hypercalcemia. Increase in PTH is responsible to mobilize calcium from bone to blood, that we have already seen. Increase in PTH is responsible to mobilize calcium from bone to blood. Increase in PTH causes calcium reabsorption in the kidney. Increase in PTH causes calcium reabsorption from the kidney, and increase in PTH causes calcium absorption in gut through vitamin D. मतलब reabsorption of calcium from kidney, reabsorption or absorption more calcium from the gut, digestive system with the help of vitamin D. So this is the function of actually happens when there is a hyperparathyroidism. तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये कैल्शियम बोन से अगर ब्लड में मूव होता है तो क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज इन बोन्स. बोन पेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोमैलेसिया. बोन के अंदर पेन होना, हड्डी में पेन, ऑस्टियोमैलेसिया. डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स रिजल्ट्स इनटू ऑस्टियोपोरोसिस. कैल्शियम निकल जाएगा तो बोन ऑस्टियोपोरोसिस होएगा. बोन डिफॉर्मेशन एंड fractures, kidney stone, peptic ulcer, calcification of blood vessel and joints. This is the things happens when calcium moves from bone to blood. Hypoparathyroidism, hypo, less secretion. It results into hypofunction of PTH. हाइपोफंक्शन ऑफ पीटीएच रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड. अब यहाँ क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड में एक ऑप्टिमम लेवल कैल्शियम की होना जरूरी है मसल एक्टिविटी के लिए. नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है. सो ब्लड में अगर कैल्शियम नहीं है तो calcium will not supplies to muscles, striated muscles. It causes muscular twitching, cramps and spasm. Twitching means jerks. Muscles में ऐसे jerks आएंगे. Convulsions. Cramps in the same thing, convulsions. That is a contraction of muscles, but not in our control. Involuntary contraction of muscles, and many times it is very painful. Spasm and cramps is the same thing. Cramps and spasm, that is the involuntary contraction of muscle. Sudden involuntary contraction of muscles, especially of hands, feet and face.
This is because of no calcium in the blood and no supply of calcium into the muscles. So this is all about the parathyroid gland. So we stop here. Thank you.